In this session of TS Academy, we will discuss function of mass communication. Defining mass communication. Mass communication refers to any medium intended to provide some type of information to a large portion of the population. जब कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें एक बहुत बड़े जनसमूह तक पहुंचानी होती है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूज़ या न्यूज़पेपर या मैगजीन, इन सब के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं. फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है मास कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, एजुकेट, entertain and influence, persuade people to make them function smoothly and effectively. Information. The most important function of mass communication is dissemination of information to the public, primarily through news media, electronic and print. Information diffused through this channel is about new events, products, changes in policies, ideas. Mass media are particularly effective to spread current information having news value. Entertainment. Entertainment is a kind of performance that provides pleasure to people. Mass media fulfill this function by providing amusement and assist in reducing tension to large degree. For example, newspaper and magazine, radio, television and online medium offer stories, films, serials and comics to entertain their audience. मास कम्युनिकेशन एंटरटेन करता है लोगों को जैसे उनकी टेंशन रिड्यूस हो सके. जैसे आजकल के टाइम में ऑनलाइन सीरीज चल रही है, लोग मूवीज देख के अपनी टेंशन रिड्यूस करते हैं, सीरियल देखते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पढ़ के अपनी टेंशन रिड्यूस करते हैं. ये सब एक एंटरटेनमेंट के पार्ट्स. परसुएशन. Persuasion is a process of influencing the audience to develop a favorable attitude towards new ideas. It seeks changes in behavior of the audience by substituting the old practice with new. Persuasiveness of mass communication depend on the following factors: source credibility, presentation of message, media factors, and audience factors. Surveillance. It relates to the constant flow of public information or news about events occurring within the country and in the world. It is the most obvious of all functions of mass communication. The surveillance function can be divided further into two types. First, warning or beware surveillance occurs when the media inform us about threats from weather changes, heavy rain, cyclone, war, etc. Second, instrumental surveillance occurs when the information useful in everyday life is transmitted, such as stock market price, new products, recipes and so on. सर्विलेंस में क्या होता है, जैसे वेदर चेंजेस होता है या कहीं हैवी रेन या साइक्लोन आने वाला होता है तो वेदर फॉरकास्ट के थ्रू सभी को ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वे अलर्ट हो जाएं, अपनी सेफ्टी या प्रिकॉशन वो ले लें. जैसे हैवी रेन या साइक्लोन है तो जो मछुआरे होते हैं उनको ये अलर्ट कर दिया जाता है कि वो सी के अंदर ना जाए. इंस्ट्रूमेंटल सर्विलेंस में क्या होता है, हमारी डे टू डे लाइफ से जो रिलेटेड होते चीज़ें होती है उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाए. जैसे मार्केट प्राइस अप डाउन जो होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, या कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं मार्केट में वो हमें बताए जाते हैं. इंटरप्रिटेशन. द मास मीडिया डू नॉट सप्लाई जस्ट फैक्ट्स एंड डेटा but also explanation and interpretation of events and situations. News analysis, commentaries, editorial and columns are some example of interpretative content. कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है तो उनको एनालाइज करके, उनको फैक्ट्स को पूरा एनालाइज करके उनको समझाया जाता है ताकि वो इजीली लोगों को समझ में आ सके. Linkage. Correlation address how the media presents facts through the world. For example, mass advertising attempt to link the need to buyers with the product or sellers that we use to move through the world. Socialization. It is the process whereby we learn and internalize the values, belief and norm of our culture and in so doing develop a sense to self. There are many agents of socialization such as our families, the friends we gain
and the institution we believe in. Thanks.